From power and gas load shedding to the closure of CNG stations, the people have braced it all. But with no gas for their cars 2 days a week, not only are motorists suffering, taxis fare in Peshawar have almost doubled. Due to the expense incurred on petrol, most people who had converted to CNG are now at a loss. मैं सुबह घर से निकला हूँ, यहाँ रास्ते में गाड़ी बंद हो गई है, अभी कहीं पे गैस नहीं मिल रहा, मेरे गाड़ी में पेट्रोल सिस्टम खराब है, मैं अपने गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डलवा सकता. But alternate fuel is just not an option for those who cannot afford it. We parked our cars here and we are facing problem because we cannot afford petrol and diesel, and we are running our cars on CNG. That's why we are facing a lot of problems. CNG owners say closing stations in NWFP where a sufficient quantity of gas is available is meaningless. They say the ulterior motive of gas load shedding is to provide gas to the rental power plants. जब 150 MCF गैस देते हमारे तमाम इंडस्ट्री, डोमेस्टिक, CNG स्टेशन और पूरे एंटायर NWFP को जब गैस मिल जाए तो हमारी 120 MCF गैस हमारी पर डे के हिसाब से कंज्यूम होती है. 30 MCF गैस हमारे पास फिर भी फालतू हो जाती है. कई हज़ार अरब रुपए का जो CNG इंडस्ट्री है उसको तबाह करने पे तुली हुई है सिर्फ 2-3 जो रेंटल पावर प्लांट हैं इनको गैस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इन्होंने गलत एग्रीमेंट किया. जब इनको पास गैस नहीं थी तो इनको रेंटल पावर प्लांट की जरूरत भी नहीं थी. While gas and power fight it out in official quarters, the public will have to live with the facts for the time being. This cheap fuel will no longer be available for 2 days a week in NWFP. This will not only hit the CNG owners, but will also affect the local transporters and the end consumers who are already suffering a lot. Mumtaz Bangash, Dawn News, Peshawar.